Hello students, this is your Shashank sir and this is the solution for full test 8 starting with question number मेरा part 141 से start होता है. Question number 141. So according to the question, which of the following confirmed that communities with more species tend to be more stable than those with low species. तो मेरे को क्या मालूम है, अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का था. डेविड टिलमैन का जो एक्सटर्नल फील्ड एक्सपेरिमेंट उसमें ये बताया गया था कि द स्पीशीज डाइवर्स रिच प्लॉट इज स्टेबल ईयर ऑन ईयर, राइट, इन रेस्पेक्ट विथ प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू वन विथ अ होमोजाइगस कंपोजिशन जहाँ पे प्रोडक्टिविटी फ्लक्चुएट करता था. ठीक है, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्म्ड कम्युनिटीज विद मोर रिलेटिव मोर स्टेबल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. ये था डेविड टिलमैन का एक्सटर्नल फील्ड एक्सपेरिमेंट. पॉल एलरिक रिबर्ट पॉपर्ट हाइपोथेसिस था एंड एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज्ड द टाइम बायोडाइवर्सिटी. सो 141 का बी. क्वेश्चन नंबर 142, कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस मोस्ट सीवियर. कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस मोस्ट सीवियर कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया, राइट. सो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया हैव अ सीवियर कंपटीशन. Coming to the next question, question number 143. Read the following statements and choose the correct option. Net primary productivity is the amount of biomass available for consumption of carnivores. Carnivores नहीं, NPP हमारे herbivores के लिए रहता है. करेक्ट है, ये वाला गलत है. Secondary productivity is defined as the rate of energy storage at consumer level. This is correct. Primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. This is also correct. The monthly net primary productivity of the whole biosphere, monthly नहीं, ये yearly होता है, right. Net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons of organic matter. So wrong है. Secondary productivity is equal to NPP minus the rate of respiration and other loss. नहीं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो एनपीपी जो कंज्यूम करेगा हमारा कंज्यूमर्स, ठीक है. सो दैट इज द ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस उसका खुद का जो रेस्पिरेशन लॉस होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, राइट, वही हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू एनपीपी माइनस रेट ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये वाला गलत है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी. Coming to the next question, migration is the movement of individuals from a population to another population. This is correct. Emigration is the migration of individuals out of an area. This is also correct. Immigration is the migration of individuals into an area. This is correct. Gene flow cannot alter the genetic characteristics of population. This is wrong. Gene flow can alter, right? ये गलत है, right? Gene flow keeps separated population genetically similar. This is true. मतलब अगर से suppose A and B are both separated population और अगर A से B में जीन फ्लो हुआ और B से A में जीन फ्लो हुआ, करेक्ट है, तो अल्टीमेटली दोनों में जेनेटिक सिमिलरिटी होगा ही होगा, राइट. सो जीन फ्लो कीप्स सेपरेटेड पॉपुलेशन जेनेटिकली सिमिलर. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए. Coming to the next question, match the following. Helper T cell क्या करता है? It helps to activate B lymphocytes, right, to become plasma cells. Plasma cells क्या है? These are the cells that are responsible for production of antibody. Killer T cell क्या है? Killer T cell combine with antigen to cause lysis and interferon क्या है? Protein produced by virus infected cell. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी. Come to the next question, match the following. Squamous epithelium मेरे को कहाँ पे मिलेगा? एंडोथेलियम ऑफ लंग एंड एल्वियोली. सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगा? ब्रोंकाई एंड फैलोपियन ट्यूब. ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगा? पीसीटी एंड इंटेस्टाइन. वेरस कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगा? फेरिंग्स एंड ब्यूकल कैविटी. करेक्ट है, राइट. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी. ए इज 3, बी इज 4, सी इज 1 एंड डी इज 1. C is 2 and D is 1. Coming to the next question, which are the following the correct sequence of evolution of reptile? So evolution of reptile में यहाँ पे according to the given options it is lizard, उसके बाद आता है snake, उसके बाद tortoise, उसके बाद crocodile, right? So this is lizard, snake, tortoise and crocodile. Coming to the next question, ATPase activity in the muscle fibers lies with. ATPase activity कहाँ पे होगा? It is the head of the meromycin. Head of the meromycin में आपका ATP actin binding site as well as ATP बाइंडिंग साइट जहाँ पे ATPase एंजाइम मिलता है वो हेड ऑफ हेवी मेरोमाइसिन में होता है. ओके, कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू रिमूव फिम्ब्रे ऑफ द बैक्टीरियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट हैपन? अच्छा, फिम्ब्रे किस में हेल्प करता था? अटैचमेंट टू होस्ट. तो अटैचमेंट लूज हो जाएगा तो बैक्टीरिया वुड नॉट एडर टू होस्ट टिश्यूज. बैक्टीरिया वुड नॉट बी एबल टू एडर टू होस्ट टिश्यूज.
Coming to the next question, the disease causing chronic inflammation of the lower limbs. Disease causing chronic inflammation of the lower limbs क्या है? वो है वुचेरिया ब्रैनकॉफ्टी. करेक्ट है. Now which of the following is incorrect for hormonal contraceptive pills? मतलब contraceptive pills जो hormone based है उनके लिए क्या not applicable है? So they inhibit evolution. This is correct. Alternation in endometrium, yes, वो endometrium के structure को alter कर सकते हैं. Change in cervical mucus impairing ability to allow the passage of transport of sperm. This is also correct. Induction of implantation in fallopian tube. Induction या फिर helping in implantation of fallopian tube. This is not correct because वो उनका अगर वो implantation करने ही देते तो वो contraceptive pills नहीं कहलाते. So 151 का हो जाएगा D. Now the next question, the sequential events which is cyclical, a repeated is called cardiac cycle in heart and it consists of क्या क्या होगा? Systole and diastole of both atria and ventricles. यही तो होता है systole and diastole of both atria and ventricles. Coming to the next question, cerebellum has a very convoluted surface in order to provide space for more neurons. This is correct. Medulla is connected to the spinal cord. Medulla contains controlling center for respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion. This is also correct. Cerebral aqueduct forms connection between brain and spinal cord. अच्छा, सेरिब्रल एक्वेडक्ट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल. एक्चुअली वो ब्रेन के जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल होता है, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, cerebral aqueduct actually connects third and fourth ventricle and is not directly connected to the spinal cord, but according to our diagram में हमको वहाँ से उस cerebral aqueduct brain के होते हुए spinal cord में दिखाया गया है. तो ये according to our book इसको correct मान सकते हैं, but accuracy में this is not correct. ठीक है. Now the two hemisphere of the brain is connected by basal ganglia. This is wrong. It is collected by whom? Corpus callosum. तो ये वाला गलत है. So according to the options given, A is the most appropriate one. लेकिन अगर मेरे को absolute truth जानना है, so 1 and 2 are the absolute truth here. Coming to the next question, matching 14th day, मतलब ये menstrual cycle का दिया है. 14th day is the release of secondary oocyte, release of secondary oocyte. ठीक है ना. ovulation, ये ovulation होता है 1st to 4th या फिर 1st to 5th day, right? This is the shedding of the endometrium lining. This is the shedding of the endometrium. This is the menstrual phase. ये क्या हो गया? menstrual phase हो गया. This is the menstrual phase, right? Okay. 15 to 28th day, it is the formation of the corpus luteum. Formation of corpus luteum, this is the luteal phase. Whereas 5th to 13th day is the development of the Graafian follicle या फिर follicular phase. है कि नहीं है? Correct है. तो ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन हो जाएगा A is 4, B is 3, C is 1 and D is 2. Coming to the next question, 155. The antibodies against smallpox pathogen are produced by B lymphocytes. This is correct है. Antibodies are protein molecules, each of which has 4 light chains. 4 light chains नहीं है, 2 heavy chains है, 2 light chains है. The performed antibodies need to be injected to treat the bite by a viper snake. This is correct, right? Passive immunity चाहिए. Rejection of kidney graft is the function of T lymphocytes. This is also correct. Cell mediated immunity. The primary and secondary immune response is carried out with the help of only B lymphocytes. This time not only B lymphocytes but T lymphocytes is also required. T lymphocytes is also required. So 5 is wrong. So 2 is wrong and 5 is wrong. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा which of the following are incorrect पूछा है. So D, 2 and 5. Gamete intrafallopian tubes, gift, it involves what? It involves the transfer of ovum from donor to another female who cannot produce the ovum. Coming to the next question, which of the following correctly lists the biological process that directly increases the population density of a given habitat over time? तो मेरे को मालूम है natality, mortality, immigration, emigration. तो इसमें से natality and immigration has a positive effect on population density, right? So यहाँ पे 157 का हो जाएगा C. Coming to the next question, the sperm from the seminiferous tubule first pass through the epidermis. नहीं, first pass through epidermis. If you remember the sequence, ये seminiferous tubule से होके tubuli recti जाता था, tubuli recti से होके retetestis जाएगा, retetestis से होके vasa efferentia जाएगा, vasa efferentia से होके epididymis and then vas deferens, right? तो एपिडिडाइमिस पहले नहीं आ सकता है. पहले कौन आएगा? रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, उसके बाद ही एपिडिडाइमिस. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द वासा एफरेंशिया कनेक्ट्स द रेटेटेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस एंड प्लेज अ रोल इन ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स. यस, यहाँ पे क्या बोला है कि द वासा एफरेंशिया कनेक्ट्स द रेटेटेस्टिस एंड द एपिडिडाइमिस. तो रेटेटेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस के बीच में कौन है? वासा एफरेंशिया ही तो है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वेयर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. अच्छा, ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. कौन सा? पेपेवर सोमनिफेरम. पेपेवर सोमनिफेरम.
Coming to the next question, initiation of parturition in humans is triggered by complex neuroendocrine signals. क्या है, कौन responsible है? Both the fully developed fetus and the placenta. 160A. 161 Thorn of Bougainvillea and Tyndall's cucurbita analogy, right? As they नहीं, right? Analogy, and they perform different functions but have common origin. नहीं है, करेक्ट है. दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऑरिजिन एंड सेम फंक्शन है. दिस इज डिफरेंट ऑरिजिन एंड सेम फंक्शन विच इज अल्टीमेटली एनालॉजी होता है, ठीक है. फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन्स, अगेन दे रिप्रेजेंट व्हाट, एनालॉजी. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. Coming to the next question, question number 162, expiratory capacity क्या है? It's TV plus ERV. Functional residual capacity ERV plus RV. Vital capacity क्या है? Vital capacity is ERV TV plus IRV, whereas total lung capacity is vital capacity plus residual volume. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा A. Coming to the next question, which of the following accurately explains reason behind formation of characteristic large holes in sweet cheese? मतलब sweet cheese में बहुत बड़े बड़े होल होते हैं as compared to Roquefort cheese, right? So this large holes is found because of large amount of carbon dioxide produced during fermentation. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 163 का D. Coming to the next question, ZIFT, it is the transfer of zygote into the fallopian tube. Gift, it is the ovum from the donor transferred to another female's fallopian tube. ICSI क्या है? This sperm directly injected into the ovum. and IUI क्या है? Semen introduced into uterus or vagina. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? A is 2. Coming to the next question, in situ, it involves the entire, in situ क्या है? In situ conservation, it involves protecting entire ecosystems within their natural habitats such as national parks and biosphere reserves. तो 165 का क्या हो जाएगा? 165 का A. Coming to the next question, which term is used to describe rate at which producers synthesize organic matter in an ecosystem measured per unit area and per unit time? So per meter square per year, right? Kilocalorie, gram per meter square per year ultimately क्या है? This is gross primary productivity. 166 का C. Coming to the next question, question number 167, myasthenia gravis. Myasthenia gravis, a chronic disorder characterized by progressive weakening and fatigue of skeletal muscles due to impaired communication between nerve impulses and muscle fiber at the neuromuscular junction. ये ultimately myasthenia gravis होता क्यों है? It is an autoimmune disorder where antibodies target acetylcholine receptors on the muscle fiber. ये autoimmune disorder है जिसमें acetylcholine receptors को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है नहीं? करेक्ट है, right? Now erythrocytes, question number 168, erythrocytes are biconcave, non-nucleated in most mammals, contains hemoglobin and iron containing complex protein responsible for red color. This is correct. Neutrophils and monocytes are phagocytic white blood cells that destroy foreign organisms, while basophils are involved in inflammatory reactions by secreting substances like histamine and serotonin. Now both these statements are correct. So 168 का क्या हो गया? 168 का A. Coming to the next question, question number 169, बैक्टीरिया. बैक्टीरियल क्या है? बैक्टीरियल विल कॉज द निमोनिया. प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ करेगा एमीबोसिस. वायरल डिजीज कौन सा है? कॉमन कोल्ड. वेरस फंगल डिजीज कौन सा है? रिंगवर्म. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 169 का C. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the chemical nature of the hormones secreted by pituitary gland? Pituitary gland का chemical nature, almost all they are exclusively proteinaceous in nature, consisting of long chain of amino acids. 170 का A. Question number 171, which of the following is only present in male cockroach? तो male cockroach में यहाँ पे मेरे को mushroom gland दिख रहा है, right, as well as anal style. So mushroom gland and anal style in the given option are only present in a male cockroach. So option क्या हो जाएगा? B, A and D. Coming to the next question, peripheral nervous system comprises of all the nerves that are associated with the central nervous system. This is correct. These are bundle of nerves that helps connect the central nervous system to the rest of the body. Peripheral nervous system is classified into sympathetic neural system, parasympathetic neural system. नहीं, peripheral neural system is divided into somatic neural system जो voluntary को control करता है, as well as autonomic neural system जो involuntary को control करता है. So reason is wrong. तो assertion is right, reason is wrong. तो option क्या हो जाएगा? C. Coming to the next question, again match the following. Mutualism, यहाँ पे example क्या है? Bee pollinating an orchid flower, right, whereas receiving the nectar as reward. Commensalism क्या है? Orchid growing on a mango tree. Competition क्या है? Abingdon tortoise and goat on Galapagos Island. Parasitism क्या है? Ticks on dogs. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? A. 173 का A.
Coming to the next question, right? So following events in the human menstrual cycle. So human menstrual cycle में पहला you will see there is development of primary follicles. There is development of primary follicles. उसके बाद जब primary follicles एकदम बड़ा हो जाएगा Graafian follicles के उधर पे, तो यहाँ पे peak LH secretion भी चला आएगा, FSH surge, LH का peak हो जाएगा, ठीक है. So this is number 2. Right, thereafter there is rupture of Graafian follicles and release of ovum, this is 3. Right, then there is formation and degeneration of corpus luteum, and there is degradation of endometrium and thus followed by menstruation. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, D, C, E, A and B. This is the sequence. Coming to the next question, choose the correct match. Cranial bones 7 pairs. Cranial bones में 12 pairs. So but I know cranial bones total 8 number of bones से बनता है. Cervical vertebrae 7 pairs नहीं है, 7 number है. Floating ribs 2 pairs, yes this is correct, right? There are 4 bones. Clavicles 2 pairs नहीं होता है, 1 pair होगा, right? So वहाँ पे 175 का क्या हो जाएगा? C. Coming to the next question, 176, choose the correct component of the endomembrane system. So endomembrane system में GERL, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम है कि नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एंड लाइसोसोम. Coming to the next question, question number 177, which of the following ecological interactions correctly identified as an example of commensalism? Right, lichens formed by the association of algae and fungi, this is mutualism. Clownfish living among the tentacles of sea anemone, this is correct, commensalism का होता है. Cuscata growing on hedge plant and absorbing nutrients, this is a parasite, right? Whereas microalga function, mycorrhizal function associated with roots of higher plants, this is again mutualism. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 177 का B. 178, which species became extinct in recent history was native to Australia? Thylacine. 179, which of the following ecosystem and inverted ecological pyramid most likely to be seen? तो inverted ecological pyramid most likely एक pyramid of biomass होता है that is found in aquatic ecosystem, right? So 177 का C. Now is primarily responsible for graft rejection? It is cell mediated immunity. Cell mediated immunity is primarily directed for graft rejection. ठीक है, तो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर योर फुल टेस्ट 8. मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ. थैंक यू.